I welcome all of you on platform of YourPedia Education, and today I'm going to interact with the Professor AP Singh, Dr. AP Singh. He's head of the department in Punjab University in Mechanical Engineering Department, and a very learned man, very learned, erudite personality. And this my entire interaction is about why a student should join MTech courses or higher education courses in prestigious universities like Punjab University. See, there are a couple of reasons why you people should join some courses, and universities like Punjab universities, they provide you very good ambience or environment to think of pursuing your career in particular directions. Many of you aspire to go for higher education abroad and pursue research further. They are in the process of preparing for various exams. They want to do, specialize themselves in particular domains. Like Professor Singh will tell you, for mechanical engineers, what are the 5 main areas where you should specialize, including supply chain management and IoTs and this automation. So he will tell you some 5 specialization which you can think of pursuing, like rapid prototyping or 3D printing. So these are some areas in which you can specialize and create career for you. Fee structure is very less and scholarship you get it, and best platform to launch yourself in various career domains, whether it is higher education abroad or it is preparing for competitive exams or getting placement or specializing yourself and getting into the industries. Also, the industries are in the vicinity. There are Ludhiana industries and all. So those of you who have so far not joined master's program, they can also think of joining these courses or joining the universities, prestigious universities like Punjab University. So let's interact with Professor Singh and see how what we have to get in Punjab University in Mechanical Engineering Department. Okay, so Professor Amarinder Pal, I'm really thankful, sir. You gave me time today for this interaction. Thank you, Dr. Jaswinder Singh, for giving me this opportunity to interact with the audience in your channel. I look forward to very healthy interaction with you. Thank you. Okay, Professor Pal, first I request you to introduce Punjab University and engineering wing of Punjab University, which is called UIT, to all the listeners here. Punjab University is very prestigious university, sir, and we want you as head of the Department of Mechanical Engineering to tell us something about UIT and about Punjab University. Actually, Punjab University is one of the four oldest universities established in the modern India before independence, along with the University of Madras and the University of Calcutta and one more university, I think it is the University of Pune or something. So these four universities are in the Indian education sector for the longest time ever at present. So Punjab University was established at Lahore in 1882, and on independence it moved to the eastern Punjab. So, and it finally settled at the Union Territory of Chandigarh, and we are at present located in the urban area of Chandigarh city. And Punjab University has throughout kept very high academic rankings in all the you can say domains of education, and it has more than 72 departments in its campus with the student strength of more than 15,000. And the engineering program in the campus was started in year 2002 with mechanical engineering undergraduate program starting in the year 2004. Then we started with the PhD in the year 2011, and one postgraduate program in mechanical engineering was started in the year 2014. So in engineering, we are quite young and energetic department of the university, whereas other departments are there for decades. Okay. So that's how the brief. Yeah. So it's a wonderful and very beautiful campus, sir, in city beautiful, which is Chandigarh. And Professor Pal, this is a great opportunity for students if they get a chance to study there and shape their career.
I wanted to interact with you, sir, because of one very pertinent question nowadays. जैसा हम देखते हैं सर कि सारे स्टूडेंट्स दे आर रनिंग टुवर्ड्स courses like computer science, IT, and all. And there is a doubt in the minds nowadays that what will happen to the core mother branches like mechanical engineering, civil engineering, electrical engineering. So, how do you see, Professor Singh, this new trend that students are going for those branches only, which are relatively new, but they are more job related as far as industries are concerned. लेकिन जो एक मदर ब्रांचेस हैं जो मेरे को लगता है इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है. सो आई वांट टू टेक योर ओपिनियन एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सर, दैट व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दीज ब्रांचेस. Very pertinent question, Dr. Jaswinder. In the recent times, we are witnessing this trend that there is an unprecedented rush towards computer and related technology. This rush was always there, but it was in the terms of like preference for computer science. हाँ जी. Other branches also had, but now it seems like people are getting a little desperate towards the computer science. This desperation is quite, I can say, is genuine, as a student who enters into engineering after doing 12th. He would like to lay his or her hands on the best of the available careers. Mm-hmm. But if you read the jobs of future report of World Economic Forum, Okay. it lists number of you can say jobs that will be going extinct Okay. in the next decade or so. Mm. So there are some of the traditional professions or you can say jobs which are going to go extinct. For example, if you look at the mass production, which is you can say predominantly a mechanical engineering field, this mass production is switching over to majorly controlled by manless factories. Mm-hmm. Okay, you are having a completely automated systems installed, Mm-hmm. which work without any human intervention. Mm-hmm. So are some other, you can say, domains. But this gives us an indication towards the direction in which the world is moving towards in Okay. terms of technology. Mm. Now, the question is that ultimately what we are aiming to set our career for. Mhm. Majorly, any branch that you take in engineering, generally an engineer after graduating is expected to solve some complex engineering problems. Mhm. It is related to not any specific domain. Most of the jobs are multidisciplinary in nature. Mhm. For example, any particular job, if we say that it will have purely mechanical, you can say aspects, it is not true. It will have some electrical engineering components. It will have some programming. It will have some electronics involved in it. So it will require a multidisciplinary approach. So if you look at the quality jobs that the students are aiming towards, for example, nowadays, those are basically in the form of like product development. Okay. And then providing solutions faster using the technology. So in these domains, there is a huge demand for even the core engineering skills. Core engineering skills, for example, if you can formulate a geometry, do its finite element analysis, and optimize it for some performance, and then develop an improved design. Now, even an Apple iPhone would also require input from mechanical engineer in many aspects. Mhm. So conventionally, when we see about a graduate, a 12th class student who is entering into graduation, he might not look into that kind of aspect and go to that extent.
but the skilling that needs to be done, it requires some updation in the form of that whether the students are taking up the you can say curriculum which you can say integrates all such components that are required for those jobs. Okay. Once you acquire those skills, do some open online courses, do very good internships in industry, I think no branch of engineering is ever going to go out of demand. That's true. So it is basically if you read even the Indian AICT report, it says that the 90 very high percentage of engineers that graduate, they are unemployable because they lack in certain skills. Okay. Fall in that 8 to 10% of the category which has those requisite skills, I think there is no dearth of jobs for an engineer. सही बात है. That is true, Professor Singh, because industries को requirement है, tremendous requirement है हर डोमेन में, हर कोर ब्रांचेस के अंदर, and you rightly said कि स्किल की requirement है. Professor Singh, I want to ask you next. My question is related to these skills only, and I will relate it with your courses, master's courses, which, as you said, you started these courses in 2014, I suppose. So, Professor Singh, what are the latest domain in mechanical engineering? If I ask you, आपने कुछ का रेफरेंस ऑलरेडी दे दिया है, तो कौन सी ऐसी डोमेन है सर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डायरेक्शन में एक अपकमिंग रिसर्च एरियाज या स्पेशलाइजेशन की डोमेन्स हैं जिनका इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, और उनके लिए कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है? देखो आजकल सबसे जो आई वुड से माय टॉप 5 skills for a graduate engineer, one can major in any one of these areas. The first skill is that if you are good at in analysis. Okay. If you are good in like analyzing a problem, okay. Maybe you can learn some finite element analysis. Okay. You can say software. After doing all the theory subjects related, there is a tremendous. You can go into the structures. You can go into the fluids. You can do various kinds of analysis, and you can you should so analysis means mastering into it over the entire depth of the field by doing some good problems and projects. And if possible, if you can do some industry internship during your graduating years, that would add to your benefit in of acquiring skills. Second skill that students can go towards is additive and subtractive manufacturing. Okay. Additive manufacturing earlier it was only for lab prototyping. To prepare only prototypes using 3D printers and other related technologies. But now these technologies have been scaled for industrial usage, and it gives you much better efficiency. So students can you can say go in that direction and master their skills in that. Third field that I have seen recently is which has a lot of you can say overlap with the data analytics field, and that and it covers a much wider you can say job market, and that is industrial engineering. Okay. So industrial engineering has risen over last you can say few years, और इसमें बहुत सारी jobs हैं. Supply chain management है, optimization और आपकी production operations management, इसमें बहुत सारी jobs हैं और काफी wide varied sectors में है. और चौथा जो सबसे बड़ा skill है वो है robotics and automation. रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में अगर आप हर इंडस्ट्री में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में आपका ये स्किल है आगे जाके ये इट इज गोइंग टू बी इन बिग डिमांड इन फ्यूचर. तो पांचवा स्किल है वो है फॉर एग्जांपल आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजी. अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर को 5G अपना इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च की है. So this is going to strongly invade into our lives.
over the next 2 years, the promise is that major telecom or IT providers, internet providers हैं, ये 2 साल तक या 2-3 साल में पूरे कंट्री में ये 5G सर्विसेज, विच इज अ बिग थिंग. अब ये 5G सर्विसेज हैं जो ये हर एक डिवाइस, हर एक मेंबर का एक अपना आईडी होगा, एंड इट कैन इंटरैक्ट, इट कैन कम्युनिकेट. मशीन्स मैन के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, ह्यूमन मैन कैन कम्युनिकेट विद मशीन. So there is a strong, you can say, interaction. और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका बाकमाल एप्लीकेशन हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, आप रिमोट लोकेशंस पे बैठ के भी आप अपने मशीनरी एंड इक्विपमेंट का रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं. रिसेंटली आई वाज टॉकिंग विद वन ऑफ द मेजर you can say CNC machines developer of India. They are coming up with these solutions, जिसको हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं, इंडस्ट्री 4.0, which covers basically these IoT based technology. तो इसमें बहुत ही बड़ा एक फ्यूचर में रहने वाला है. So what I say that these are my 5 topics. Very precisely explained sir कि डिजाइन एनालिसिस FEM से लेके तो IoT इंडस्ट्री 4.0, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह, ये सारा जो आपने समराइज किया है, दिस इज रियली वेरी गुड. और उसमें मेरे को लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये जितनी टेक्नोलॉजीज हैं डॉक्टर साहब, दीज विल आल्सो फाइंड द प्लेस इन द सेम. Certainly. हाँ जी. The key areas, and we have to update our skills and tune it during the graduating years. A student should take initiative. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है आज के डेट में, जहाँ पे स्टूडेंट खुद इसमें एफर्ट मार के एक्सेल कर सकता है. प्रोफेसर सिंह, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन भी एक, ऑनलाइन लर्निंग भी एक पैरेलल सोर्स ऑफ लर्निंग बन गया है. अदर देन क्लासरूम लर्निंग, स्टूडेंट ऑनलाइन की तरफ भी काफी ज्यादा इंक्लाइंड होता है और काफी ज्यादा सर्टिफिकेशंस लेता रहता है, काफी ज्यादा लर्निंग करता रहता है. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हाउ एजुकेशन कैन बी मेड अ हाइब्रिड? किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है एक स्टूडेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है? आई थिंक मैं आपको हम बेसिकली कोविड से पहले इतना इससे एक्सपोज्ड नहीं थे. कोविड ने हमें मजबूर कर दिया कि हम ऑनलाइन पे शिफ्ट करें, और कोविड में हमने कुछ ट्रेडिशनली बेनिफिट भी हुए, कुछ लॉसेस भी हुई. लॉसेस इन द टर्म ऑफ, क्योंकि हम एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासरूम टीचिंग के ऊपर पले और बड़े हुए, तो एकदम हमें ट्रांजिशन हो गया, एंड इट लेड टू सम यू कैन से confusion for some time. But now it is sorted out. Even look at our younger generation, जो अभी फर्स्ट और सेकंड के बच्चे हैं, उनको भी यही फेस करना पड़ा. जो ग्रेजुएट हो रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको भी यही फेस करना पड़ा. So but I must tell you, this online you can say teaching or learning process is going to stay here forever. But it doesn't mean the classroom teaching is going to end. So there has to be an optimum mixture of the two in the form of hybridized teaching. कुछ बच्चे आपने इंटरेक्शन करनी है, लैब वर्क करना है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करनी है, उसके लिए 1-to-1 इंटरेक्शन की जरूरत है. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ये कर रखा है कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करो, अटेंड दोज लेक्चर्स एट द कंफर्ट of your home, and then come to the classroom और वहां पे आके lab based practice करो और projects करो. So it is left to, now it requires tremendous amount of discipline on part of the students as well as on the faculty. So students पे अब उनको, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग है, आपको लेक्चर वीडियो पढ़े हैं, आप उसको बार बार देख सकते हैं, आप उसको कंफर्टेबल अपने कन्वीनियंस पे देख सकते हैं. तो देयर इज अ ट्रेमेंडस सेविंग ऑफ टाइम. विद मोर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न. उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, हम किसी भी, अब पहले होता था कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज या टॉप रैंक इंडिया की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को से पढ़ने का कुछ बच्चों को ही अपॉर्चुनिटी मिलती थी. बट नाउ एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट has
you can avail the opportunity of learning from world's best professors. That's true. उनकी classes online attend करके आप not only that you can learn, but you can also get a certification, which is which remains valid throughout life. Most of the MOOCs जो courses होते हैं वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, और आप LinkedIn पे देखो सब लोगों की प्रोफाइल में कुछ सर्टिफिकेट उन्होंने अपने कमाए हुए होते हैं. And those certificates basically certify what kind of skills you are having. That's true. और बहुत सारे employer तो केवल उन्हीं से प्रोफाइल किए जाते हैं. That's true. You can build your careers. आप एक डायरेक्शन लें, जैसे मैंने 5 डायरेक्शंस बोली, Right. तो हर एक स्टूडेंट जो चाहे वो अभी यूजी में है चाहे वो पीजी में है, he should decide as early as possible कि उसने किस डायरेक्शन में जाना है. तो उस डायरेक्शन में अपने आप वो मेजर स्किल्स गेन करे और उससे उसका करियर बहुत अच्छा होगा. वेरी ब्यूटीफुली सेड सर. बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस्ड आपने बता दिया है प्रोफेसर सिंह, हाउ इट इज टू बी डन एंड हाउ वी कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज. नाउ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर इंटरेक्शन प्रोफेसर सिंह, एंड my last question to you is again related to UIT Punjab University, and that is related to your department. Higher education के लिए students have many options nowadays. I mean different institutes हैं. So my question to you, Professor Singh, is like जो आपने skills mention किया, सारी domain mention की, yours department आपने masters 2014 में start किया है sir. It is relatively new, I must say. So can a student who aspires to go for higher education, can he get the opportunity to get skilled in all these 5 high demand areas for engineering जो आपने mention किया, and why a student should look for Punjab University to get higher education in mechanical engineering domain? Dr. Yajwendra, I would say that Chandigarh में पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के कुछ फायदे जो होंगे, कुछ इनिशियल आपको जो बोनसेस मिलेंगे, लेट मी लिस्ट आउट अ फ्यू ऑफ देम. तो सबसे पहला तो बोनस ये है कि दैट आजकल इफ यू गो फॉर एन एजुकेशन, it is very costly in many of the you can say universities. Maximum universities charge a lot of fee. So Punjab University has a very moderate fee structure, which majority of the Students can afford. वो भी अफोर्ड कर सकते हैं. और दूसरा आप पढ़ोगे एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में जो कि एक बहुत ही अच्छे सिटी में एसोसिएटेड है, placed है. और and we have a wonderful network under the ambient of CRIC. चंडीगढ़ सिटी ट्राई सिटी में अगर आप बात करोगे तो CRIC के चंडीगढ़ रीजनल इनोवेशन नॉलेज क्लस्टर, CRIC. So this was initiated a few years back by our ex vice chancellor. तो क्रिक में चंडीगढ़ के बहुत सारे 20-25 जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है वो सारे एक क्लस्टर के अंदर क्लब है. So this when a student joins here, so he or she can avail many facilities available at these surrounding institutions. और ऑनलाइन बाकी जो कोर्स वर्क है वो तो जैसे मास्टर्स का होता है वो तो वही है, लेकिन मेजर फोकस ऑफ एज यू सेड दैट स्टूडेंट वांट्स टू गो फॉर हायर एजुकेशन, मास्टर्स के बाद पीएचडी करना चाहता है, तो अ स्टूडेंट नीड टू पिक अप अ वेरी गुड प्रॉब्लम दैट ही कैन एक्सपर्टीज ऑन ड्यूरिंग द मास्टर थीसिस, और उसी डायरेक्शन में फिर वो आगे जाके अपनी पीएचडी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकता है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में. तो हमारे यहाँ द फोकस इज वी आर फिस्ट डीएसटी डिपार्टमेंट. हमारे को डीएसटी ने एक सेंटर फॉर बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस का एक हमारे पास ग्रांट है डीएसटी की, जिसमें कि हम 5 एक्सिस मशीन पे वी आर सून गोइंग टू प्रोक्योर इट. और इसमें 5 एक्सिस CNC you will not find in many of the institutions. और उसमें आप जैसे ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं या आप एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, 3D प्रिंटिंग में हमारे पास
डिजाइन इनोवेशन सेंटर में मेडिकल एंड रिस्टोरेटिव टेक्नोलॉजीज का एक बहुत अच्छा लैब है। और इसके अलावा वी वर्क ऑन द बेस्ट ऑफ द मटेरियल्स, जो एडवांस्ड मटेरियल्स उसमें काम कर रहे हैं। ऑटोमेशन में लॉट ऑफ पीपल, वाइब्रेशन एंड कंट्रोल में हमारी फैकल्टी काम कर रही है। दे आर वेरी गुड एप्लीकेशंस इन दैट डोमेन। एंड रिसेंटली जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, सो वी हैव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन यूनिट in our department itself। हमारी वर्कशॉप में ये है और उसमें कुछ स्टार्टअप्स ऑलरेडी काम कर रही हैं। देन देयर इज अ मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इंक्यूबेटर है। एक और बायोटेक में बायोनेस्ट एक करके सेंटर है हमारे पास। तो पंजाब यूनिवर्सिटी हैज लॉट ऑफ, एंड इन एडिशन टू दैट वी हैव टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर व्हिच वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हमारे, इफ यू विजिट द टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर portal on Punjab University website, you will see a list of problems given by the industry of Tri-City और around। हम इवन पंजाब का पूरा, हिमाचल और हरियाणा काफी एरिया कवर करते हैं टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर में। एंड दे हैव लाइक प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें पड़ी हुई हैं जिसमें कि इंडस्ट्री चाहती है कि स्टूडेंट्स इनोवेट करें। So students can work on those live problems which are supported by industry. They can take the help of all the cluster institutes. So Chandigarh has immense opportunities for students to really work for। और पंजाब यूनिवर्सिटी का इतना अच्छा नाम है, मास्टर्स करके आप यहाँ से जाते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, if you have good publications made done in your master thesis, हमारे स्टूडेंट्स बहुत बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। वंडरफुली एक्सप्लेन डॉक्टर सिंह। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट प्लेस, और बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। और नए कोर्स, नए इंस्टीट्यूट के अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर इंजीनियरिंग विंग नो डाउट इज relatively new, but it is full of dynamic young mentors, young teachers, and बहुत से incubation centers और research facilities जो आपने mention किया sir, I am very sure that will help student a lot in pursuing their career in research, higher education. And also Chandigarh has a very good industrial clusters also. I know there is a places like Ludhiana and all, so many industries, and vicinity में भी काफी अच्छी opportunities हैं। So Dr. Singh, let me now at the end thank you once again sir. You have provided a holistic perspective and view about the opportunities existing to those students who are pursuing their education in core domains, core branches, and बहुत beautifully आपने 5 पॉइंट मेंशन किए हैं। I am very sure जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उनको हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ पे उनका इंटरेस्ट है और किस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए, so that they find themselves employable in the industries and they get very good jobs. So thanks a lot, Dr. Singh. Thank you, Dr. Jaswinder, for this opportunity for interaction. Best wishes. Thank you.